Chapter number 5, death of partner. See, practical question for 10 marks, objectives 3 with option. Accounts to be prepared. Now, death of partner, you should do it properly because it will come in an option for with analysis of financial statement. So, it is advisable, or we personally advise that solve this question only, death of partner, and don't go for analysis of financial statement. So, death of partner mein accounts to be prepared. Again, same like admission, retirement death, revaluation, partner's capital and balance sheet after death. So, if they give you in death of partner ka question, what you should take care of is this: read entire question nicely and read the last line properly. If they give you prepare necessary ledger accounts or necessary account, then you have to prepare all the accounts. That means revaluation account, partner's capital and then balance sheet. You have to do all. Sometimes they may tell you to draw only deceased partner's capital account in case of death of partner. And in that case you have to draw only deceased partner. Deceased partner का मतलब जिसका death हुआ है वो partner, उसका ही capital account. So in this case I'll advise while solving death of partner पहले question अच्छे से पढ़ लो. अगर कुछ बोला नहीं है, if nothing is mentioned, then you have to do all obviously. Then you have to prepare profit and loss adjustment, that is revaluation, partner's capital and balance sheet after death. But sometimes in question they may give you to prepare only deceased partner's capital, या फिर sometimes they tell you to prepare revaluation and deceased partner's capital. ये दोनों भी हो सकता है. So in that case this question will be consuming less time. ये question जल्दी हो जाएगा. See, if you are going to prepare all these three things, then obviously it will take 20 to 25 minutes. But only deceased partner's capital, अगर हमने वो prepare करना है, if you have to prepare only deceased partner's capital, then this question can be completed in 10 to 15 minutes. So let's see exactly how to solve this question. Death of partner. Now, once again, content will be, again balance sheet will be given to us. Old balance sheet जिसमें तीनों partners होंगे, किसी एक का death होगा, suppose यहाँ पे C partner का death हुआ. हमेशा ये भी अच्छे से पढ़ना कि कौन से पार्टनर का डेथ होगा. वी ऑलवेज हैव अ हैबिट कि जो थर्ड पार्टनर होता है उसका ही डेथ होता है. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी. यहाँ पे कभी ए का या बी का भी डेथ हो सकता है. सो ऑलवेज रीड दैट केयरफुली. इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो, इफ 3 पार्टनर्स आर गिवन इन अ रो, दैट इज ए बी सी, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सी है रिटायर होगा हमेशा. तो वो ध्यान रखना हमेशा. तो सपोज यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में, if C partner is a deceased partner, then again नीचे adjustment दिए होंगे. Adjustment regarding what? Revaluation of assets and liabilities. देखो हमने retirement के केस में भी यही किया था. And few goodwill adjustments. Treatment will be same as retirement. That means journal जो adjustment का treatment होता है वो exactly same as retirement में होगा. But अगर क्वेश्चन में आपको बोला होगा प्रिपेयर डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल ओनली, इन दैट केस तुम्हारे क्वेश्चन का कंटेंट, दैट मीन्स तुम्हारे सोल्यूशन का कंटेंट क्या होगा? यू विल बी प्रिपेयरिंग ओनली डिसीज पार्टनर. डिसीज पार्टनर सपोज अपने केस में कौन है? तो सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतना ही बनाओगे आप लोग. एंड वर्किंग में आप लोग प्रिपेयर करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ क्वेश्चन, सर व्हाई टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट? अदरवाइज हाउ विल यू गेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? जो अपने को डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा उसका शेयर. तो अगर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ऐसे उन्होंने बोला, इन दैट केस वी हैव टू प्रिपेयर ओनली डिसीज पार्टनर्स कैपिटल और वर्किंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. बट अगर क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो तुम्हारा सोल्यूशन होगा सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे आप लोग. यू विल बी प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट and deceased partners capital account. Then your content will be this. Then normally solve your revaluation adjustments. After solving adjustment, you'll get a profit or loss. Suppose if you are getting profit will be distributed among A, B and C. Out of that only C's share will be transferred here, and then this will be closed. After closing this, whatever balance you will be getting here, this balance will be transferred to his legal executor or legal heir account, because उसका तो डेथ हो गया तो उसके अकाउंट में नहीं जा सकता, उसके लोन अकाउंट में नहीं जा सकता, तो उसके लीगल हेयर या लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व डेथ ऑफ पार्टनर क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी LMR notes. See this, we have discussed this.
Accounting entries same as retirement, as I told you, retirement जैसे ही सब होगा, that means revaluation of assets, revaluation of liabilities, goodwill treatment and all. Gain ratio का formula, new ratio minus old ratio. In case of total firm's goodwill, again there is no need to calculate gain ratio, again same logic or same rule as per retirement of partner. If entire firm's goodwill is to be raised, then there is no need to calculate gain ratio. Then in absence of any information to calculate new PSR, just remove share of a deceased partner. Means A, B, C, 3 partners are given, the ratio is 3:2:1. And if C is a deceased partner and no other information is given, then इसमें से आप C का share remove कर दो. What remains will be the new ratio of continuing partners if no information is given to us. Then when partner died in between accounting year, अगर उसका death हुआ, in that case, see, for drawings इफेक्ट होगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में और कैश बैंक के क्रेडिट साइड में. दैट मीन्स इफ drawings are made by that deceased partner, then it will be recorded on the debit side of partner's capital, that particular partner's capital, and credit side of cash or bank. तो एंट्री आएगा deceased partner capital account debit to cash or bank. Interest on drawing, again same logic, capital account will be debited, but here P&L suspense account will be credited here. Okay. In case of interest on capital account will be credited, that means it will be written on the credit side of partner's capital, and debit side of profit and loss suspense account. In case of salary to partner, capital account credit, P&L suspense account will be debited. For a share of profit, capital account credited and P&L suspense account will be debited. Okay. And once again, just now I told you, if you are going to prepare revaluation, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, यानी क्वेश्चन रीड करने के बाद अपने को पता चला कि अपने को ये तीनों चीज़ें बनानी है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 20 से 25 दैट इज 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए. एंड इफ ओनली डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, देन दिस क्वेश्चन विल गेट ओवर इन 10 मिनट्स. बट एट द सेम टाइम प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एज अ वर्किंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस, और डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट लॉस का शेयर होगा वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो दिस इज अबाउट debt of the partner.